This passage is from a dark psychological thriller that revolves around a married couple, Ben and Liz, whose ordinary life quickly turns into a nightmare. At the beginning, their situation reflects financial stress and personal struggles, as Ben worries about losing his job while Liz tries to support them by taking on a modeling assignment. However, the story takes a sinister turn when Liz goes to a photo shoot at a mysterious photographer's house, who is later revealed to be a psychopathic killer obsessed with turning death into art. He drugs and traps his victims, treating them as lifeless masterpieces. As Liz becomes trapped, the tension escalates through her desperate phone call to Ben, where she is terrified but unable to clearly explain her location. This triggers a frantic search, turning the narrative into a race against time. Meanwhile, Ben's situation worsens when he accidentally kills a man and, with the help of his friend Nick, attempts to cover it up. This introduces suspicion and complexity as Nick's behavior becomes increasingly questionable, hinting that he may be involved in something darker. A key theme in this story is moral ambiguity. None of the characters are completely clean. Ben, although driven by love, commits questionable actions. Nick appears manipulative and possibly complicit, and the killer represents pure madness, justifying his crimes through a twisted artistic philosophy. The villain is especially disturbing because he views death as beauty, turning human suffering into a form of expression. In the climax, the connections between the characters begin to unravel, revealing deeper layers of betrayal and danger. Eventually, Ben and the police manage to find Liz and rescue her, but the experience leaves a lasting psychological impact. The ending blends relief with horror, as survival comes at the cost of trauma. Ben starts as an ordinary, somewhat stressed husband, but as events unfold, he becomes desperate, reckless, and morally compromised. His love for Liz pushes him into extreme actions, including violence and covering up a death. Liz, on the other hand, transforms from a vulnerable and struggling woman into a symbol of survival, enduring psychological and physical terror. Nick is one of the most complex characters, initially appearing as a supportive friend, but gradually revealing suspicious behavior that hints at manipulation or hidden motives. The killer stands apart as a fully realized psychopath, calm and calculated, treating human life as material for his art. The scene is built around rising tension and uncertainty. It uses a non-stop escalation technique. Each moment becomes more intense than the last. First, Liz disappears. Then her disturbing phone call creates fear, followed by Ben's accidental killing, which adds another layer of chaos. The story constantly shifts between... ये मेरी टेबल है, ये मेरा क्यूट सॉफ्ट टॉय टर्टल, एंड ये हमारी लिटिल अलमारी है जिसके अंदर ज्वेलरीज डेकोरेट होती हैं. Just look at, oh, so beautiful and closed. ये our jar है जिसके अंदर मैंने बहुत क्यूट से स्टार्स मेड किए हैं, पेपर स्टार्स. ये इनको मैंने खुद ही बनाया है. और ये क्यूट सा पॉट है जिसके अंदर क्यूट सा रोज़ है. ये मेरा लिटिल प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है. और ये हमारी बास्केट है जिसको हमने डेकोरेट किया हुआ है. ये पेंटिंग है जो मैंने खुद बनाई है. ये बॉल है जो गिफ्ट्स हैं हमारे, ये भी गिफ्ट है. और ये बहुत प्यारा लिटिल कैमरा है, इसकी ये लुक्स है. और ये क्यूट सा टेडी है. ये डायरी एंड बुक है, ये भी गिफ्ट है. और ये पूरा रोज सेटअप है, ये बुके है, 2 हैं ये. और ये पेंटिंग है जिसको मैंने खुद मेड किया था, पूरा प्लांट. और इसके अंदर ये पूरा पेपर. ये मेरी पूरी टेबल है जहाँ पे बैठ के मैं अपना वर्क करती हूँ. और ये पेंटिंग भी मुझे गिफ्ट है. लुक हाउ ब्यूटीफुल. एंड ये ऑल्सो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. ये डायरी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक डायरी है. और ये पेंट है, इसको मैंने खुद किया है, पोस्टर कलर्स और उन सारे कलर्स को मेड करके. जस्ट लुक एट. हेलो गाइस, ये मेरा सॉफ्ट टॉय है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है.
ये टर्टल है, मिनी टर्टल। इसका सारा थ्रेड का वर्क है। इसकी आईज बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। इसके पास आईब्रोज भी हैं, लुक, एंड इसके पास टीथ भी हैं एंड स्माइल भी। और इसका सारा का सारा वूल बना हुआ है, सारा। इसके हैंड्स भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। Cute. Just look at face. Oh. Next thing हमारे पास ये है ज्वेलरी बॉक्स। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और यूनिक भी है। I will show you. Look. इसके इनसाइड पे मिरर है और ये यूँ ओपन हो जाता है, देन ये क्लोज्ड होता है। और इसके अंदर ये भी हैं जहाँ पे हम अपने टॉप्स और वो सारी चीज़ें हैंगिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर ये स्पेस भी है जहाँ पे हम अपनी रिंग्स और बाकी सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। जस्ट लुक। एंड इसके 2 ड्रॉर्स भी हैं, ये जहाँ पे आप कुछ भी अपना रख सकते हो, नेकलेस कुछ भी। और ये भी है, इसकी निकल भी जाती हैं और दोबारा इजीली लग भी जाती हैं। आई विल शो यू। यूँ और ये भी यूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और इसके यहाँ सारे टेडीज़ बने हुए हैं। इसके कलर्स, इसकी हर थीम बहुत ज़्यादा क्यूट है। रोज़ की तरह है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही। ये फुल अंदर का इंटीरियर है सारा। यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो, जो चीज़ आपको सूट हो। वहाँ पर सारी चीज़ों को आप हैंगिंग कर सकते हो, कुछ भी चीज़। ये भी लाइक आई हैव दिस किचन और इसके अंदर लाइट्स भी हैं। जो ये लिटिल कैमरा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जस्ट वॉच। वही किचन है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये। और हम इसे हैंगिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम ईयर्स को हैंगिंग कर सकते हैं, ईयररिंग्स को हैंगिंग भी हो सकता है। आप इसे यूँ करके रख भी सकते हो, आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हो, आप ड्रॉर्स के अंदर भी रख सकते हो, लाइक दिस। एंड देन क्लोज। कितनी ज़्यादा क्यूट है। नेक्स्ट मेरे पास ये पूरा जार है और ये पूरा शीशे का है। इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर सारे मैंने पेपर के स्टार्स बनाए हैं। लाइक दिस। ये मैंने एक एक अपने हैंड से बनाया है सारा। इस चीज़ को मैंने एक एक वर्क किया है। Use of fragmented information, like incomplete addresses and cutoff calls, enhances the suspense, making both the characters and the audience feel lost and anxious. This structure is typical of strong thrillers, where confusion and urgency drive the narrative forward. At its core, the story explores deep psychological and philosophical themes. One major theme is obsession. The killer is obsessed with creating perfect art through death, while Ben is obsessed with saving Liz at any cost. Another key theme is control versus helplessness. Liz is physically trapped and powerless, while the killer controls everything, creating a disturbing imbalance. There is also a strong commentary on human darkness.
showing how ordinary people like Ben can cross moral lines when pushed to extremes. Lastly, the idea of death as art adds a philosophical layer, making the villain more disturbing, because he believes his actions have meaning and beauty. Trust is constantly tested throughout the story. Ben trusts Nick as a close friend, but Nick's strange behavior and hidden knowledge slowly break that trust. Liz trusts the photographer at first, thinking it's a normal job, but that trust leads her into danger. The story shows how easily trust can be manipulated and how betrayal often comes from the people or situations you least expect. This creates emotional tension alongside the physical danger. The atmosphere plays a huge role in building fear. The isolated house, the late-night setting, and the silence between intense moments all create a sense of dread. The killer's calm and almost artistic behavior contrasts with the horror of his actions, making scenes even more disturbing. Instead of relying only on violence, the story uses psychological fear, uncertainty, helplessness, and anticipation to keep the tension high. There are subtle symbolic elements throughout the scene. The camera and photography represent control and perception, how the killer captures people not just physically, but permanently. Liz's eyes are repeatedly mentioned, symbolizing life, identity, and emotion, which the killer is obsessed with preserving. The idea of art becomes a twisted symbol of justification, showing how people can distort reality to excuse their actions. The story highlights how extreme situations reveal the true nature of individuals. Ben is forced into moral conflict. He wants to do the right thing, but survival pushes him into making wrong choices. It raises the question, how far would someone go to save a loved one? The line between hero and criminal becomes blurred, showing that under pressure, even good people can make dangerous decisions. Even though Liz is eventually rescued, the ending is not purely happy. The trauma she experiences, along with Ben's actions, leaves emotional scars. The story emphasizes that survival doesn't erase what happened. This gives the ending a realistic and haunting tone, relief mixed with lasting psychological damage. It leaves the audience thinking about the consequences long after the story ends.